1 Bill 2022. Now the question is, leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Ayes. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The leave is granted. Deputy Chief Minister and Minister in charge Finance may now introduce the bill. Mr. Speaker, sir, I move that the bill be introduced. The Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2022 is introduced. Item number 5, consideration and passing the Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2022. Now the Deputy Chief Minister and Minister in charge Finance may seek to move for consideration of the bill. Mr. Speaker, sir, I move that the bill be taken into consideration. Now the question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. Now the House will take up clause by clause consideration of the bill. The question is clause 2, 3 and the schedule to stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 2, 3 and the schedule are adopted. Now the question is that clause 1 enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 1 enacting formula and long title are adopted. The Deputy Chief Minister may move for passing of the bill. Mr. Speaker, sir, I move that the bill be passed. Question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The Arunachal Pradesh Appropriation Bill Number 1, 2022 is passed. Now the House will take up general discussion on demands for the grant for the year 2022-23. The Chief Minister may please move demand numbers allotted to him. सेम जगह नीचे में है Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding respective amounts shown in the third column of the order paper be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demand entered in the second column thereof against demand number 1, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 18, 25, 31, 33, 34, 46, 47, 51, 63, 67, 70, 71 and 78. नीचे वाला नीचे उसको भी वापस करना है सर उसको वापस करना है I'll request all the honorable ministers to check the monitor. If there's any hitch, call the technician. So now the Deputy Chief Minister Mr. Speaker, and sir, Minister, let me sir. on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I make to move that the sum not exceeding the respective amount shown in the third column of the must be granted to the Minister in charge of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh
for or towards defraying the charges during the year ended 31st day of the March 2023. In respect of the heads of demands entered in the second column thereof, demand number 7, 13, 34, 36, 54, 55, 66. The Minister, Public Health Engineering and Water Supply, Department of Tirap, Changlang, Longding, and Information Technology, may please move demand numbers allotted to him. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 59, 65, and 73. The Minister, Rural Works, Science and Technology, may please move demands number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of the March 2023 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 26 and 49. Thank you. The Minister, Urban Development, Municipal Administration and Government Estates, Civil Supplies and Consumer Affairs, Geology and Mining, may please move demands number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 22, 37, 57, 61, and 68. The Minister, Health and Family Welfare, Social Welfare, Women and Child Development, Social Justice, Empowerment and Tribal Affairs, may please move demand number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sum not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order phase be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charge during the years ending 31st day of March 23 in respect of the head of demand entered in the second column thereof against demand number 11, 15, 74, 80, and 81. Thank you. The Minister, Home and Interstate Border Affairs, Rural Development and Panchayati Raj, Parliamentary Affairs, IPR and Printing, may please move demands number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for and towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 8, 27, 35, 42, 53, 58, 69, and 72. The Minister, Industries, Skill Development, Textile and Handicrafts, Trade and Commerce, Labor and Employment, Cooperation, may please move demands number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that sums not exceeding respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund, State of Arunachal Pradesh, or towards defraying the charges during the year
ending 31st day of March 2003 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 19, 20, 29, 60, 64 and 79. The Minister, Youth Affairs, Sports, Water Resources, Environment and Forest, may please move demands number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 21, 23, 38 and 52. Thank you. The Minister, Tourism, Transport and Civil Aviation, Land Management, may please move demands number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendations of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of order papers to be granted to the Minister in charge out of consolidated fund of State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of heads of demands entered in the second column thereof against demand number 30, 41, 45, 56 and 62. The Minister, Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry and Veterinary, Dairy Development, Fishery, may please move demand number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendations of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sum not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order paper be granted to the Minister in charge out of consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh for or towards paying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of entered in the second column thereof against demand number 24, 28, 43 and 48. The Minister, Education, Cultural Affairs, Department of Indigenous Affairs, may please move demands number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amount shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 14, 16, 75, 76 and 82. Now that all the demands for grants for the year 2022-23 have been moved and are before the House, members who want to speak on these demands may do so. Now the House will take up for voting on demands for grants for the year 2022-23. The question is that the demands for grants for the year 2022-23 be passed. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The demands for grants for the year 2022-2023 are passed. Now the introduction of Arunachal Pradesh Appropriation Number 2, Bill 2022. Deputy Chief Minister and Minister in charge, Finance, may seek to move for the leave to introduce the bill. Mr. Speaker, sir, I move that leave be granted to introduce the Arunachal Pradesh Appropriation Bill Number 2, Bill 2022. Now the question is leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The leave is granted. The Deputy Chief Minister and Minister in charge, Finance, may now introduce the bill.
Mr. Speaker, sir, I move that the bill be introduced. The Arunachal Pradesh Appropriation Number 2 Bill 2022 is introduced. Now, consideration and passing of the Arunachal Pradesh Appropriation Number 2 Bill 2022. Now, the Deputy Chief Minister and Minister in charge Finance may seek to move for the consideration of the bill. Mr. Speaker, sir, I move that the bill be taken into consideration. That the question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. Now the House will take up clause by clause consideration of the bill. The question is clause 2, 3 and the schedule do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 2, 3 and the schedule are adopted. Now the question is that the clause 1 enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 1 enacting formula and long title are adopted. The Deputy Chief Minister may move for passing of the bill. Mr. Speaker, sir, I move that the bill be passed. Now the question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The Arunachal Pradesh Appropriation Number 2 Bill 2002 is passed. Now we will take up private member resolution. The House will take up the private member resolution regarding old pension scheme. That is GPF. Shri Muchumuthi may move his resolution. Budget discussion नहीं हो. Discussion? Discussion. Budget discussion. Now that will take this after that only. क्या आपका यहाँ में brief में नहीं है ना? Thank you, Adhyaksh ji. Just wait. Huh? गलत हो गया. तो लास्ट में होगा ना. EL number 6 डिस्कशन करके पास कर दिया. वही तो गो बाय पासिंग कर दिया. बस प्रोसीजरल तो पास हो गई. ये तो पास हो ही गया. तो पास हो गया. ये तो पास हो गया. Without discussion pass हो गया. It's a very efficient government. Anyway, we will take up the discussion now. Give everybody. Anyway, it's already been passed. We'll take up again anyway. गड़बड़ हो गया. ये लगता है. ओवर एक्सीलेंट हो गया. तो पूछा था हम तो नहीं बोल रहे. पास हो गया ना. आज तो वही बस बिना तो फेल कर देगा. रिकॉर्ड दो बार पूछा है. बजट को डिस्कस हो जाएगा. जिस नाम किया है ना, कलेक्ट नेम्स ना, बुलाएगा ना, वो बुलाएगा ना. No. Appropriation का आंसर plan. I think I have already asked the members to take part, but no one, responded. I waited for a while. But the names, Tana, names दिया था. Huh? You have given our names there. No. I've already called out if anyone wants to speak, but we have only. No problem. It's okay. Now we'll take up for discussion. So we have only 5 names which has come up to me. So I suppose that there are only 5 members who will take part in that discussion. If anyone wants, please send your names as quick as possible because we need to work out the timing. So any members willing to take part in the discussion, I have names from 5 of them. The first is Rodebui. The chat box is also open. If someone wants to, send the name, please send the name in the chat Honorable Speaker, sir, मैं
आपके माध्यम से बजट डिस्कशन में पार्टिसिपेट लेना चाहूँगा। मैं हमारे डायनेमिक ऑनरेबल मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री डिप्टी सीएम सारे मंत्रीगण को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 2022-23 का जो बजट जो प्रस्तुत किया गया है वो आम जनता के लिए काफ़ी लाभदायक है। खास करके जो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एग्री एलाइट में जो प्रावधान किया है ये काफ़ी लाभदायक है। हेल्थ सेक्टर में खास करके जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेडेशन के लिए 250 करोड़ जो रखा है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी फायदामंद होगा हमारे जनता को। और 60 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक चुनाव क्षेत्रों में मॉडल जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो रखा है ये भी काबिल तारीफ है। जो आर्थिक करोड़ इयरमार्क किया गया है ये काबिल तारीफ है। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रिम्स फॉर पोर्टी बेडेड जो ट्रिम्स हॉस्पिटल हमारे अरुणाचल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक लोन हॉस्पिटल है कि जहाँ पे हमारा जो काफ़ी इलाज हुआ चलता है, क्योंकि इंसान का जान तो कीमती है, इसलिए हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत है। इसलिए जो ध्यान दिया गया हमारे बजट में, जो ध्यान दिया गया है ये काबिल तारीफ है। और ख़ास करके जो एजुकेशन सेक्टर में मिशन शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, स्कूल्स और कॉलेजेस में 1330 करोड़ जो रखा है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारा स्कूल कॉलेजों के लिए, स्कूल के लिए। और जो 50 ईयर गोल्डन जुबली मॉडल स्कूल, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मॉडल स्कूल के लिए जो पैसा रखा है 500 करोड़, ये भी एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी लाभदायक होगा हमारे आने वाला पीढ़ियों के लिए। और जो मुख्यमंत्री चिकित्सा कोर्स जो रिपेयर्स वगैरह, सब्जेक्ट टीचर वगैरह पोस्टिंग के लिए जो रखा गया है ये भी काबिल तारीफ है। ये नहीं हुआ। और एजुकेशन एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलम का ताकत जैसे दुनिया में कोई ताकत नहीं है। आप जो डिग्री हासिल करेगा, डॉक्टरेट इंजीनियर डिग्री हासिल करेगा, मरते दम तक आपका प्रॉपर्टी बन के रहेगा। आप ज़मीन बिक सकता है, आलीशान मकान बिक सकता है, पैसे चले जाएंगे, लेकिन जो डिग्री हासिल किया ये मरते दम तक आपका साथ प्रॉपर्टी बन के रहेगा। इसलिए एजुकेशन का क्षेत्र में जो ध्यान दिया गया है ये काबिल तारीफ है। और मैं इसमें थोड़ा सा एक सुझाव देना चाहूँगा। मैंने खास करके जो हमारे अरुणाचल में 19 कॉलेजेस है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेजेस में एक सोशोलॉजिस्ट जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर का ज़रूरत है, क्योंकि हमारा बच्चों को थोड़ा सा परेशानी झेल रहा है उस सब्जेक्ट को प्रोफेसर नहीं मिलने के कारण। तो थोड़ा सा सरकार से मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान देने से बढ़िया रहेगा। और एग्री एलाइट में जो बजट प्रावधान किया ये भी काबिल तारीफ है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब हम आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल, हम ऑर्गेनिक अपना खुद पैदा करना है, क्योंकि आज मिलावट सब्जी मिलावट खाने की वजह से हमारे यहाँ में तरह तरह की बीमारी, यहाँ में कैंसर बीमारी का डिजीज़ है, किडनी फेलर है, स्किन डिजीज़ है, लिवर सिरोसिस है, तरह तरह की बीमारी पैदा होता है। इसलिए
अपना यहाँ में ऑर्गेनिक जो सब्जियाँ पैदा के लिए, अच्छी मच्छी पैदा के लिए जिन्होंने जो बजट में रखा है, ये काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी काबिल तारीफ है। और हमारे यहाँ पे जो फार्मर लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग और जो संगठन एनजीओस काफ़ी रुचि है अभी काम करने के लिए, उनको प्रमोट किया जाएगा इस स्कीम से। जैसे कि बागवानी योजना के जरिए, आत्मनिर्भर का जरिए हमारे अरुणाचल को भी हम ऑर्गेनिक स्टेट या आत्मनिर्भर बनाना है। और काफ़ी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो अपना इंटरेस्ट ले रहा है कि एग्री एलाइट में, फिशरी में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। उसके बाद मैं अपने टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में आऊँगा। मैं भी टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का एडवाइज़र हूँ। तो खास करके हमारा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में जो अभी कॉर्पस फंड रखा है, 2 करोड़ कॉर्पस फंड रखा है। इनकरेज सेल्फ हेल्प ग्रुप इनकरेजमेंट के लिए 5 करोड़ रखा है। ये काफ़ी फायदेमंद होगा हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, या हमारा जो आर्टिसन क्राफ्ट आर्टिसन के लिए। क्योंकि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में मैंने देखा है कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स को वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करा सकता है। इसलिए मैं सरकार से एक सबमिशन, एक सुझाव देना चाहूँगा, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट होने से काफ़ी फायदेमंद होगा हमारा युवा पीढ़ी के लिए। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम में 2-3 दिन पहले प्रोग्राम में गया था। काफ़ी एनजीओस आए हुए थे और काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप आए हुए थे। उन्होंने अपना जो क्राफ्ट बनाया, जो कपड़ा बनाया, उनको प्रमोट किया था। तो अभी हमारा खास करके जो एनजीओ संगठन और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग बिल्कुल अपना यहाँ का जो क्राफ्ट वगैरह, जो कपड़ा, वो अपना यहाँ से पर्दा करने के लिए बिल्कुल लगा हुआ है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान देने से ठीक है, सरकार से मैं निवेदन करता हूँ। और ख़ास करके ये टेक्सटाइल में हमारा जो प्रमोट में जो कपड़ा बनाने के लिए और जो क्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए एक यहाँ में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने से काफ़ी हमारे युवा पीढ़ी को फायदेमंद होगा। यही मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ। और ख़ास करके अभी अरुणाचल में जो कि आत्मनिर्भर हमें बनाना है, हमें यहाँ पे अपना ऑर्गेनिक स्टेट बनाना है। इसीलिए अभी जो बजट जो रखा है एग्री एलाइट में, एजुकेशन में, हेल्थ में रखा है, उसी के लिए मैं सरकार को, हमारे युवा डायनेमिक मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री डिप्टी सीएम को, सारे मंत्रीगण को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। श्री लोकमता सर, थोड़ा समय का ख्याल रखिएगा, बहुत है पार्टिसिपेंट। थैंक यू स्पीकर सर। तो आज मैं बड़ी खुशी से हमारा ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब का जो बजट स्पीच को मैं भाग लेने के लिए मैं बहुत खुशी से भाग लेना चाहूँगा। हमें आज खुशी ये भी है कि यूनियन मिनिस्ट्री का जो बजट, जो बॉर्डर एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है, जिसके लिए मैंने ये असेंबली में भी
लास्ट ईयर हमारा इंडो तिब्बत बॉर्डर का लेजिस्लेचर का थ्रू से हमें यहाँ सुझाव दिया था, उसको सुन के मैं बहुत खुशी है। और आज जो बजट बनाया गया 2022-23, अब ये आने वाला 2023 ये साल के लिए बजट टू फिगर है, बजट फॉर एजुकेशन सेक्टर रुपीस इतना, बजट फॉर हेल्थ सेक्टर रुपीस इतना, लेकिन उसमें जो प्लानिंग फॉर द एक्टिविटीज ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ में जानकारी जाना जाता है कि हाउ क्रिएटिवनेस इज आवर लीडर ऑफ द हाउस श्री पेमा खांडू जी, इनका क्रिएटिवनेस किस तरह है, कवरिंग ऑल द सेक्शन ऑफ द पीपल, कवरिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, measuring the detailed landscapes of the state of the Arunachal Pradesh। उसमें हमें ये जानकारी, उसमें हमारा दिल ये मजबूत होता है कि आवर चीफ मिनिस्टर इज ए डायनेमिक। एक फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग होना, हम लोग का निसिंग में एक साइटेशन है सर, हम थोड़ा सा निसिंग साइटेशन को बताना चाहूँगा। ये on how a beginning year, financial year production starts. Du tamangne milange michariku me debayani gupchariku pincheng pako yapchariku chengtara be du tamangne milange mi petla chengte hanya relariku Sente angu riku ala atu gong tebu kadue audo ani pertene bermerin tene jebang di rem tela jakabi preng tela duk tamangne abodi haralo ge miligi aligam amling aligam kum biam aligam puliyali amgam जबू जकब कब्र गदीकू चरमुली लोंग लीरा दबे मलौली लोंग लीरा बे दबना इसके मतलब हम लोग निसिंग का जो फाइनेंशियल ईयर किस टाइप से बिगिनिंग होता है, हमें सदियों में आदमी गवर्नमेंट में था, एग्रीकल्चर सेक्टर में सेटलमेंट नहीं था। जब सेटलमेंट कहाँ से शुरू हुआ, ईयर कैलेंडर किस टाइप से काउंट हुआ, सीजन किसा करके बिगिनिंग हुआ, जब प्रोडक्शन सीजन, उसमें जो है कि हम लोग दुख तमंगने मतलब जो है कि द गॉडेस ऑफ द सीड्स, जो डोमेस्टिकेटेड सीड्स, जो जैसा जंगल का हर प्रकार का पेड़ पौधे को, हर चीज का फल को पूरा काके देखा, काके वहां से प्रोडक्शन हुए में इसका सीड का विजन उसका देवती है, और देवती ने जमीन में आके हर जमीन को उसमें उसी ने जमीन में ही लेंद किया। जो वो लेंद किया जिसे हम लोग दबे के पिंचन पैक होगा सर, हम लोग ये सीजन में यही सीजन में आपका चिड़िया जो है एक सीजनल बर्ड्स का आवाज आता है। तो यहाँ से सब आदमी हम लोग जैसा इसी लोग तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो कैलेंडर को लिखने कौन महीना में क्या प्रोडक्शन होता है, क्या यहाँ में सीजन से काउंट किया जाता है, सीजन से काउंट किया जाता है। फिर यहाँ में यही है बिगिनिंग जहाँ आदमी सेटलमेंट, विलेज लाइफ का सेटलमेंट होने के बाद, विलेज लाइफ को सेटलमेंट किस टाइप का सेटलमेंट है, विलेज लाइफ तो पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक परमानेंट सेटल प्रोडक्शन का से तो विलेज लाइफ बिगिनिंग किया। तो ये कुछ भी कहानी होने से यहाँ से बिगिनिंग होकर कहानी ऐसा लिखता है। तो आज हम लोग का ये जो बजट जो है, बजट यही बजट अभी बजट हमने हमारा
cabinet minister under leadership of the chief minister, deputy CM, तो प्लानिंग पॉलिसी जो बनाया उसी अनुसार में बजट जो बनाया, अभी हमें इसको एक नंबर जो है हमें किसा करके इसको अचीवमेंट में लाए, सक्सेस में लाए, ये अभी मैटर करता है। हमें बजट का प्लानिंग का मुताबिक में हमें डेवलपमेंट का विकास के तौर पे जाने से हमारे यहाँ में दो सब्जेक्ट है। एक जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फ्लैगशिप प्रोग्राम आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एक जो है कि स्टेट से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो ऑपरेट करने के लिए अरुणाचल में एक इनकन्वीनियंट चीज रह गया। अरुणाचल में को खाया जाने से हम लोग प्लानिंग बनाओ, अब बजट बनाइए, प्लानिंग पॉलिसी, अरुणाचल का जो कुदरत का मुताबिक में हमें फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज नेचर कैन नॉट फॉलो द गाइडलाइन, गाइडलाइन हैज टू फॉलो द नेचर। इफ वी स्पीक अबाउट द अरुणाचल प्रदेश, the detailed landscape of the state of the Arunachal Pradesh, Arunachal has got 3 temperate zone or at least 4 temperate zone. The फुटिल जो असम का जो लेवल से बिलोंग करता है, ये 1 जून होगा, उससे हायर होगा 1 जून होगा, उससे हायर होगा 1 जून होगा। इस एक जो एक्सट्रीमिस्ट दाम है स्नो और ग्लेशियर का एरिया का, तो उसी को हम लोग नप के हर टेम्परेट जून में उसका जो कोई भी नेचुरल फ्लोरा और फौना हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, इट वेरीज फ्रॉम द स्वीट्स, जैसा करके स्वीट है, स्वीटेड है, उसी अनुसार में हमें प्लानिंग एंड पॉलिसी बजट बनाना चाहिए। तो उसी के लिए हमें एक नोटिफाइड टेम्परेट जोन बनाना चाहिए। भाई हर टेम्परेट जोन का कौन सा लेवल का है, कितना एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल से है, इट इज सुइटेबल फॉर व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा करके ये बनाना जरूरी है। ये बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जानकारी देना जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन जो है, मेरा प्रथम विधायक में 2008 में एक PMGSY जो अभी जो चल रहा है, इसका गाइडलाइन का मुताबिक जो था क्लस्टर अप्रोच इन रेडियस मैनर, वही रेडियस में 4-5 गांव इन रेडियस में सेटलमेंट है, वो बीच में सड़क को बना के रखेगा 1.5 किलोमीटर, उसका हाईएस्ट पॉपुलेशन को नंबर 1 प्रायोरिटी, ऐसा करके था। तो मेरा अरुणाचल में हमने देखा, अरे मेरा गांव में खोज दीजिए, एक स्कीम भी क्वालिफाइड नहीं आ रहा है। मेरे RWD का सेक्रेटरी, RWD का मंत्री, CM साहब को पूरा दरखास्त किया, सभी बोला कि अभी गाइडलाइन है, क्या करेगा। तो मैं दिल्ली में जाके दरखास्त, मेरा एप्लीकेशन का ड्राफ्ट, ये नालों में जो अभी बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी है, हमें रिप्रेजेंट करके हमें मंत्री में उधर मंत्रालय में ये कहा कि हमारा नेचर जो है आपका यहाँ का रेडियस मीनर में नहीं है, आवर इज ए लाइनर इन्फेशन, द क्लस्टर अप्रोच लाइनर इन्फेशन होना पड़ेगा। हमारा गांव का जो सेटलमेंट है इज ऑन द बोथ साइड ऑफ द लेफ्ट एंड रिवर बैंक ऑफ ए बेसिन, तो इट इज द सेटलमेंट इन नेचर इज ए लाइनर इन्फेशन। ऐसा करके 1 टाइम रिलैक्सेशन मांगा, मिला है। तो लाइकवाइज मेरा ये दरखास्त है हर डिपार्टमेंट का मंत्री, हर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, एंड खास करके आवर लर्नेड चीफ सेक्रेटरी नरेश जी, जो अरुणाचल में हाईएस्ट टॉपर होकर फर्स्ट टाइम DC आया, ही वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल एक्टिव ऑल्सो, इज वेल अवेयर अबाउट द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द स्टेट। तो आप लोग को यह दरखास्त है कि गाइडलाइन को तोड़ा किस टाइप से नेचर का माध्यम से किस को फॉलो करते हुए, आदमी का जो अवेयरनेस को भी, कॉन्शियसनेस को भी तो फॉलो करते हुए थोड़ा रिलैक्सेशन किस टाइप से लाया जाए।
हमें देखा है जैसा अभी आपका आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, तो इसमें देखा जाए तो हमें उसमें जो गाइडलाइन के मुताबिक में जो प्रोविजन ऑफ द एक्टिविटीज, तो ये तो स्वीट नहीं है। हम कुछ भी बाजित बनाए, प्लानिंग बनाए, हम लोग आदमी का ह्यूमन जो हिस्ट्री जो बनता है, रोटी, कपड़ा और मकान, हमें रोटी को पहले ध्यान देना पड़ेगा। रोटी सही है, मकान सही होगा, कपड़ा सही होगा। तो हमें रोटी कपड़ा ये एक बेसिक प्रिंसिपल है फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो उसी दिशा पे जाए तो हमें रोटी को ध्यान देना पड़ेगा। देने से आपका यह मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ हमारा नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन का मुताबिक में, जो अदर स्टेट में लाइक यूपी, बिहार, गुजरात एंड द रेस्ट ऑफ द प्लेन स्टेट लैंड सेम स्टेटस ऑफ लैंड है, उसमें तो अच्छा से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर सब आगे बढ़ रहा है। उसमें जो कि जैसे अभी मैंने कहा कृषि और बागवानी योजना, यहाँ में बैंक लोन का भी कंपोनेंट है। यहाँ में एक चीज हमारा इनकॉम्पिटेंट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ में कि वो पैसा से वो योजना में ट्रैक्टर खरीदना है, कोई सोसेज वायर खरीदना है। इसका बाद में तो ये देखा जाएगा तो हमारा अरुणाचल में तो ट्रैक्टर चलाने के लिए तो ज़्यादा अच्छा होने से पासीघाट एरिया है, नामसाई एरिया है। मैं अपना किटी में ट्रैक्टर लगा के देखा है, ट्रैक्टर तो हेवी है, हमारा काम करने वाला को उल्टा खींच के पानी बुक्स के नीचे में ले गया। ट्रैक्टर को घुमाना और ट्रैक्टर जो एक जो है कि ड्राइवर चलाना, एक जो है कि पावर टिलर है। पावर टिलर इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। आई हैव सीन ट्रैक्टर का सब्सिडी कितना दिया गया, नो एनी ट्रैक्टर इज बीइंग ऑपरेट, उसको कोई यूज में नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो मार्केट ये नीचे में बेचता है जो बेनिफिशियल लोग या आसाम आदमी लोग रेंट लेके लेता है। तो इसे सर्टेन गाइडलाइन को एक रिलैक्सेशन करने के लिए हर डिपार्टमेंट, हर मंत्री, मेरा सुझाव एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने ये देखा है तार फेंसिंग तो हम लोग बॉर्डर बेल्ट में कभी नहीं पहुंचता है हेडलूड, और तार जो है कि आपका कुत्ती चाहिए, वो कुत्ती तो अगर काट से लगाएगा, वो काट गिलेगा तो तार भी जमीन में मिट्टी में जब मिल जाता है तो जल्दी रास्टिंग हो जाता है। द ड्यूरेबिलिटी इज नथिंग। तो उसी में आपका बैंक लोन तो ठीक है, बैंक लोन में मानता हूं, पावर टिलर ट्रैक्टर का जगह में सोसेज वायर फेंसिंग को भी मैं नहीं मानता है। उससे अच्छा हम हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में यह लागू करा कि बॉर्डर विथ क्ले का वॉल फेंसिंग बनाएगा, पत्थर अवेलेबल है, दैट विल बी वंस फॉर ऑल, और जनरेशन टू जनरेशन फेंसिंग बनाना नहीं पड़ेगा। MIC एग्रीकल्चर को मुकाबला करने के लिए नंबर 1 फेंसिंग इन द MIC जो वाटर सिस्टम जो है ये सही होना पड़ेगा। जो वाटर इरिगेशन का सिस्टम, वाटर इरिगेशन सिस्टम बोलने से उसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट अलग अलग है। उधर पहाड़ का पानी किसा निकलता है, किसा का फेलर होता है, देयर आर मेनी रीजन। नीचे फुट हिल में आपका जो वाटर, ये जो दिल्ली या अदर यूपी, बिहार, असम में देखने से तो पानी ऐसा जो वाटर ये क्या बोलता है, ड्रिपिंग ऐसा कुछ बोलता है, उसका सिस्टम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसा पानी दिया जाए वो अलग है। तो ऐसा करके एग्री और हॉर्टी को हमें झूठ देना चाहिए। यहाँ में खास करके फेंसिंग एंड वाटर सप्लाई, ये दोनों चीज है। इसका बाद में इसका बाद में जो टाइमली क्रॉपिंग, उसको आपका कौन समय में आपका जो हार्वेस्टिंग का पीरियड कौन महीना में क्या क्या सूटेबल है, ये डिपार्टमेंट वर्कआउट करना चाहिए। तो डिपार्टमेंट का जो हमने देखा है, डिपार्टमेंट का
एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, वेटनरी, इंडस्ट्री, जितना जो नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, नॉन इंजीनियरिंग जितना डिपार्टमेंट है, दिस इज द एक्चुअल द मेन इंजन ऑफ द डेवलपमेंट, मेन मैकेनिज्म ऑफ द डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज। इनका दिमाग में अगर कुछ जागरूकता अगर नहीं है तो कहां से पब्लिक रूरल आदमी जागरूकता में आएगा? तो होना जरूरी है, अवेयरनेस कराना जरूरी है। तो हमें देखा है हमारा या पीपल या जहां में जो डेवलप है, अवेयरनेस कॉन्शियसनेस है, लाइक सागाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जीरो, और जितना जितना जो फूटिल एरिया वहाँ से लेके पासीघाट हो गया, ये हो गया, हमारा बात को सुन के फिर शुरू में लगे, अरे आप लोग उधर में तो बुद्धू है, कुछ चिट्ठी करने भी नहीं आता है। हम तो हमारा तकलीफ को बता रहे हैं आप लोग को। हम चाहते हैं कि हमारा गांव आदमी, हमारा जो नौजवान भी, अनएम्प्लॉयड यूथ भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जाइए, अपना जमीन को यूज में लाइए। सभी तो नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी मिलो, नौकरी करो, एक बिजनेस करो, खेती तो होना चाहिए। दिस इज माई फोकस, क्योंकि अपना जमीन को यूज में लाना पड़ेगा। एंड माई अनदर इश्यू इज आई बीइंग फ्रॉम द बॉर्डर एरिया, इन द तिब्बत बॉर्डर एरिया, हमारा आदमी पूरा माइग्रेट होके बैठ रहा है। दिस माइग्रेटेड ग्रुप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए हम बहुत दिन रात चिंता में बैठा हूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने ये जारी किया, हमें हर एवरी ग्राम सेगमेंट में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएगा। दिन हर प्रोडक्शन जो निकलेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू से हम लोग ओवरऑल सर्कल में एक ब्लॉक में एक होलसेल नॉमिनी बनाया जाएगा, और नॉमिनी बाय कैश पेमेंट लेके उठाएगा। नॉमिनी के लिए हम एमएलए फंड से एक गाड़ी देंगे कि वो मार्केट में जो ये कमर्शियलाइज करेगा बाहर में। तभी भी आदमी पीपल कन्विंसिंग नहीं हो रहा है, ऑफिसर्स ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग मी, नहीं ये इनका बात तो सही है, उसमें जाना है, ये भी नहीं हो रहा है। इसलिए जितना जो गाइडलाइन है उसको हर डिपार्टमेंट का गाइडलाइन, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम का गाइडलाइन जो स्वीट नहीं होता है, उसमें हमें किसा करके प्लस करना पड़ेगा, इसका किसा करके माइनस करना पड़ेगा, किसा जो इनकन्वीनियंट कुछ जो गैप को किसा करके फिलअप किया जाए। ये हम लोग स्टेट गवर्नमेंट उसको या कुछ जुड़ाएगा या उसको एक साथ इनोवेटिव वे में सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम के ऊपर में हम लोग स्टेट का फंड भी एक साथ जुड़ा के जहाँ में पैसा इन्वेस्ट होता है वहाँ में अच्छा से सक्सेस होने के लिए ये एक कैलकुलेट करके एक जाने से ठीक है। अनदर थिंग इज हमें हर डिपार्टमेंट का जो सिस्टम को, जो ऑफिशियल फंक्शनिंग सिस्टम को, उसको भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक पॉलिसी बना के किस टाइप से इफेक्टिव फंक्शन हो, जो सेक्रेटरी को बात को डायरेक्टर अच्छा से फॉलो करे, डायरेक्टर और इसका नीचे को अच्छा से फॉलो करे, सो दैट एवरी रेस्पॉन्सिव आपस में जागरूकता हो जाओ। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी जिसका सीनियर हो गया, ये हो गया, वो कोई किसी का बात को भी अपना बड़ा वाला का बात को भी नहीं मानता, अरे हमको क्या सर्वे से क्या, ये चैलेंजिंग ना हो, इसका ड्यूटी हमें तो अवर पॉइंट इज पब्लिक का पॉइंट है कि हमें आपका वर्क आउटपुट हो, द वर्क आउटपुट इन टर्म्स ऑफ जो एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी हेड इज वेरी शॉकिंग। हमारा स्टेट ओवरऑल का आपका सैलरी हेड में कितना रुपया जाता है, तो कौन सा डिपार्टमेंट में इसको ब्रेकअप करके कितना कितना रुपया जा रहा है, तो इसका आउटपुट क्या है, आउटपुट टू वेरी इनप्रोपोर्शनेट है। दिस इज ड्यू टू आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम थोड़ा सही नहीं होने के कारण से हम दिखाई देता है। इसलिए हमें सब सोचना पड़ेगा। हम अभी
खुशी है बजट में, उसको किसा अचीवमेंट करना पड़ेगा, ये सुझाव मैं मेरा तरफ से जो है दे रहा हूँ। अभी आपका देखिए, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में दो प्रकार की आपका जो हम लोग ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट बोलता है। एक ब्यूरोक्रेट है, एक टेक्नोक्रेट है। हम लोग हो गया पॉलिटिक्नोक्रेट। देन ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट में भी हम जो चीज देखा है, इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग। तो नॉन इंजीनियरिंग में लाइक फिशरी डिपार्टमेंट में हमने देखा है, खास करके हमारा डिस्ट्रिक्ट का भी हम देखा है, वो एस्टीमेट बनाता है एक DFDO, डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर, वो 50 लाख 60 लाख का एस्टीमेट बनाएगा। तो हम बोला है कि आपका एस्टीमेट पास होता है क्या? हाँ, हम लोग पास करता है, पैसा मिलता है। तो दिस इज इट इज मैटर ऑफ दिस थिंग। तो ये तो हमको शॉकिंग हुआ। हम कोई भी एस्टीमेट जो अदर देन प्रोक्योरमेंट आइटम तो ठीक है, मार्केट का जो कोटेशन का मुताबिक में, मार्केट फैक्ट्री का जो और चालान का मुताबिक, रेट आइटम का मुताबिक में चलेगा। जो भी चीज फिजिकल वर्क आएगा तो उसमें क्या चीज का है, उसमें टेक्निकल का कैलकुलेशन आएगा, टेक्निकल का जस्टिफिकेशन आएगा। अब एक फिश पॉन्ड को कूदने के लिए एक उसको 8 एक्सकेवेशन होगा, उसको डिस्पोज बाहर में करने से कितना डिस्टेंस में फेंक रहा है, उसका कॉस्ट आएगा। फिर उसमें सीमेंट कंपोनेंट आएगा, तो स्टोन एग्रीगेट आएगा, सेंड आएगा। देन हाउ डू यू कैलकुलेट? हमने इनको पूछा है, वो कैलकुलेशन नहीं है। वो कैलकुलेट करता है तो देन आखिरी में रेट आएगा, डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट आके देन रेट आएगा। रेट तो कहाँ से बेस करेगा? अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ऑफ रेट को बेस करेगा। देन हु इज अथॉरिटेटिव पर्सन टू कोट द APSR? ये तो इंजीनियरिंग विंग है। तो नॉन इंजीनियरिंग विंग किसा रेट कोट करके एस्टीमेट बनेगा? तो उसको भी तो अगर फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट ये बात अगर मान के चलता तो भी तो गलत है। तो हम चाहता है सर, प्लीज 1 more सेकेंड, हमें ये हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जितना जो है वो आइडिया देना चाहिए। उसमें जितना जो टेक्निकल का पार्ट जो कंपोनेंट है जो है उसको वर्क्स डिपार्टमेंट को दिया जाना चाहिए, इंटरेस्ट करना चाहिए। हमारा सुझाव ये है कि वही है वर्क्स डिपार्टमेंट में क्या जाने से वही है PWD, वही है पावर, वही है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, वही है और RWD, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, वही है WRD, then we have got RD। PWD का रोड एंड ब्रिज में ठीक है, RWD जो जितना जो विलेज अभी जो PMG का रोड चला रहा है ठीक है। देन WRD जो है, WRD का कहे जाने से WRD डिपार्टमेंट को मैंने देखा है, ये WRD जो है अर्लियर RD WRD सब एक ही डिपार्टमेंट में था, यूनियन टेरिटरी समय में। RWD PHEB वो अंडर में था। तो अभी WRD जो है ये जो है कि आपका जो इरिगेशन का मेथड करता है, जो ये डिपार्टमेंट जो है कि जैसा ब्रह्मपुत्र बोर्ड है, ब्रह्मपुत्र का बोर्ड कोई स्कीम मेरा एक दोस्त एक बार प्रोसेस किया था दिल्ली में, मैंने पता चला वो ब्रह्मपुत्र बोर्ड से पास करना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र का बोर्ड अंदर में अगर आता है तो अरुणाचल का जैसा कि सुबनसिरी नदी है, कामिंग नदी है, तिरप लोहित नदी को सियांग सिर्फ कैचमेंट एरिया में आता है, उसको तेजू और सियांग। बाकी तो वो ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गाइडलाइन में नहीं है बोला, उसमें जैसा कि फ्लड कंट्रोल बनाना क्या बनाना। तो मैंने इसको बोला, अरे भाई वही अगर ब्रह्मपुत्र बोर्ड अगर है, वो ब्रह्मपुत्र बोर्ड मेंबर को मैंने बोला अगर ब्रह्मपुत्र बोर्ड है, अब व्हाट इज ब्रह्मपुत्र, यू शुड फर्स्ट स्टडी। ब्रह्मपुत्र एक ध्रुव से तो पानी समुद्र बनता है, ये किसा के ब्रह्मपुत्र बन गया? यू आर टू डिटरमाइन द कैचमेंट एरिया ऑफ द ब्रह्मपुत्र। तो मूल स्टेट गवर्नमेंट से आखिर में बुला के मूल स्टेट गवर्नमेंट ही
नोटिफाइड ऐसा कुछ दिशा नहीं दिया इन लोगों को कि ये बेसिन ब्रह्मपुत्र आंध्र में आता है, ये बेसिन ब्रह्मपुत्र में आता है। तो ये WRD का बात याद करके मैं ये बता रहा था। तो WRD इज इरिगेशन रिलेटेड है। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो भी वर्क है हम देखने से होती एग्री में WRD एंड RD को देना चाहिए, एजेंसी एंड RWD, ये तीनों को। और यहाँ में जो रूरल में जितना जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो भी टेक्निकल जो वर्क है तो वो होना चाहिए। एंड इंजीनियरिंग विंग में मैंने थोड़ा ये करके देखा है। अभी RD इन द पंचायत, RD में है कि आपका नीचे में सबसे नीचे में EO इंजीनियर है, देन EO एग्री है, EO इंजीनियर, देन APO RE, देन जॉइंट डायरेक्टर RE। तो जॉइंट डायरेक्टर RE इज इक्विवेलेंट टू AC, जो इसका जो फाइनेंशियल जो पावर है, जो वर्क ऑर्डर वगैरह को जो साइन करने के लिए। तो मेरा सुझाव ये है कि जो पंचायत में जितना जो JEE इंजीनियरिंग जो है वो जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम का हिसाब से आया, एजुकेशन में जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम का हिसाब में आया। तो पंचायत और RD जो रिलेटेड है दोनों को एक साथ में मार्च कराने से ठीक है। और RD में अगर इंजीनियरिंग विंग अगर रहता है तो उसमें एक चीफ इंजीनियर खुद होने से ठीक है। आपका जॉइंट APO RE और इसके बाद में जॉइंट डायरेक्टर RE ये डिजिग्नेशन को हटा के, बिकॉज दिस डिजिग्नेशन इज ए ओल्डन डिजिग्नेशन जो DRDA का रूल नॉर्म्स का मुताबिक में आया गया। आजकल DRDA का भी तो हटा रहा है, वो अभी RD में मार्च हो रहा है। तो वही लाइक मैंने आपका यहाँ में JEE एग्जीक्यूटिव और इसी चीफ इंजीनियर लेवल में अगर RD डिपार्टमेंट में अगर इंजीनियरिंग विंग अगर होना है तो मेरा सुझाव है कि वो होने से ठीक है। ये आपका जो जॉइंट डायरेक्टर RE, जो APO RE, इट्स कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। और देन इन द ब्लॉक लेवल, because RD is the department, is the key department who is operating in the grassroots level at the village level. Its administrative setup, its monitoring setup should be well transparent and very active, should be very strong. हमने देखा है एज पर जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज द की ऑफिसर in the block level, in the grassroots level. Under the umbrella of the BDO, Block Development Officer, there is a AO industry representing from industry department. There is a AO agri representing from the agriculture department. There is a AO horti, AO fishery, AO veterinary. So in गांव लेवल का मुताबिक में हम लोग तो ये समझता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट का, बिकॉज आपका BLW है, BLW जो पोस्टिंग हो गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वहाँ पोस्टिंग हो गया, तो अंडर द कंट्रोल ऑफ द BDO। अब अर्लियर यूनियन टेरिटरी पीरियड में द मॉनिटरिंग सिस्टम, द वर्क एक्टिविटी सिस्टम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द BDO वाज वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। अभी जो है कि ये होच-पोच हो रहा है। अभी BDO डज नॉट नो व्हाट एग्जैक्ट एक्टिविटीज इज फ्लैगशिप प्रोग्राम जहाँ में एग्रीकल्चर का होता है, हॉर्टिकल्चर का होता है, ये होता है, तो डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन डिस्ट्रिक्ट हेड ही खुद इम्प्लीमेंट कर रहा है, विच इज अंडर नॉलेज ऑफ नॉट अंडर नॉलेज ऑफ द BDO। तो ये होने से तो BDO नोज, तो दिस इज क्रिएटिंग डुप्लीकेसी इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज। तो इसका अलग है और BDO का अलग है। BDO is holding the detailed economic census. We follow the economic census of own block. उसमें ओल्ड एज का किस्सा है, ओल्ड एज का डिटेल है, देन बिलो प्रॉपर्टी का डिटेल है, तो हर चीज़ तो वो मॉनिटर कर रहा है। तो उसमें फिशरी डिपार्टमेंट में क्या बेनिफिशियरी स्कीम, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स क्या ले रहा है BDO डज नॉट नो, तो डुप्लीकेसी आ जाता है। तो क्योंकि RD में जितना जो है बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है, तो ये सब एक मैंने ये हो रहा है।
इसलिए उसको स्ट्रीमलाइन करने, रीऑर्गेनाइज करने के लिए मेरा ऐसा में जो वीडियो का जैसा जो फंक्शन है ऐसा रहने दे के अंडर वीडियो का अम्ब्रेला में उसको पोस्टिंग किया जाए हर डिपार्टमेंट को, जो पहले जैसा करके चलता था। तो दिस इज वन थिंग दैट हैज टू बी कीप इन माइंड टू रेक्टिफाई। ये मेरा सुझाव है। देन अनदर है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा चीफ इंजीनियर होना भी कॉम्प्लिकेट है। इस चादर में थोड़ा ये हो के जूत मूत में हम लोग पब्लिक हेम्पर्ड इसलिए आती है, पेपर वर्क डिले में, डिलीवरी ऑफ द टाइमली वर्क, इस चादर उसका एक उधर चलेगा एक उधर चलेगा। तो इसमें एक लिमिटेड उसको स्ट्रीमलाइन करने से ठीक है इंजीनियरिंग ये सेक्टर में। इसके बाद हम खास करके ये मेरा एक सुझाव है, अगर उसमें कोई गलत है तो माफ कीजिए, बिकॉज दिस इज अ प्योरली माय सजेशन व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, जो प्रैक्टिकल में जो ग्राउंड जो देखा देता है। देन लास्टली हम बोला जाए तो और बोलने के लिए है, लेकिन ज़्यादा सुनना भी तो आदमी बोर होने से तो फायदा भी नहीं है बोल के कान में नहीं घुसेगा भी तो जबरदस्ती घुसा भी नहीं दे सकता है। तो मैं कभी जो भी बोलो, हमारा ये टीम हम लोग इस बार का जो सरकार है अंडर लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू हैव ऑर्गेनाइज्ड ए टीम स्पिरिट, टीम अरुणाचल है। हर डिपार्टमेंट में भी एक टीम स्पिरिट हो, टीम RWD, टीम PWD, टीम एग्रीकल्चर, टीम हॉर्टिकल्चर, पूरा ये मैकेनिज्म को सही ढंग बनाने के बाद में टीम स्पिरिट में जाके हमें विकास को हमें खास करके रूरल गांव में कैसा करके हो। गांव में हम अकेला समझा के तक गया, आप सब ऑफिसर भी साथ दो। हम तो ये बताता है कि डेवलपमेंट गांव से आता है, रॉ मटेरियल गांव से आता है, कपड़ा भी गांव से आता है। नो बॉडी एग्री दैट कपड़ा कहाँ से गांव आता है, वो तो दिल्ली से आता है, गुवाहाटी से आता है। हम बोला इसका प्रोडक्शन तो गांव से होता है। तो इस टाइप का हम गांव का तरफ दिशा में तो विलेज डेवलपमेंट को आगे ले जाना एक हम लोग का मिशन, हर डिपार्टमेंट का जो टारगेट, एक कमिटेड टारगेट होना चाहिए कि गांव को किसा आगे ले जाए। अभी अर्बन एरिया के लिए हम लोग का ये रोड का बारे बोलने से ट्रांस हाईवे चल रहा है और PMG भी चल रहा है, ये है। और अभी गांव का भी हमें मोड़ना पड़ेगा। गांव खास करके हमारा इंडो बॉर्डर एरिया जहाँ में इनएक्सेसिबल एरियाज को एक टूरिंग प्रोग्राम का रख के हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, एक आप लोग का ब्यूरोक्रेट लेवल में, और CM साहब तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी को तो विजिट हो रहा है, इनका पास तो नॉलेज है कि कॉन्सेप्ट है कौन का किसका कुदरत किस टाइप का है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा है। तो उसी आधार पे हमारा यह प्रयत्न है कि सबको जितना जो हमारा जितना मेंबर्स है, जितना हमारा ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट को, हमारा बॉर्डर को हमारा साथ थोड़ा हमको भी इनकरेज कीजिए, और हमारा आदमी को किसा के इनकरेज करके हाउ माई पीपल टू live intact in my own land for the safeguard of the own land, being border area, international border area. तो ये मेरा प्रेयर है, प्रार्थना है आप सबको। मेरा ये है कि हमारा बॉर्डर में पूरा इंटेक्ट हो, कुछ भी इवेंचुअलिटी में अपना खुद प्रॉब्लम को कुछ भी इवेंटी में बॉर्डर मैटर्स में, बॉर्डर अफेयर्स में, इंटरनेशनल बॉर्डर अफेयर्स में सब अगर इंटेक होता है तो कुछ भी हम लोग एक साथ में अपना सेफ गार्ड के लिए काम कर सकेगा। तो दिस इज माय दिस थिंग। Another thing is honorable members, please conclude. Just 1 minute, sir. No, you are supporting or you are objecting the what called budget? No. Objection है ना supporting कर? No, supporting, sir. हाँ, तो जल्दी खत्म कर दीजिए। It is purely supporting. More than 35 minutes. My another suggestion is that we have a targeted, committed work project to be completed. जैसा कि PMG विषय में अभी सब लोग बोल रहा है,
आपका सितंबर में कुतुब नहीं आएगा तो फान आना लॉक हो जाएगा। तो ये भी मेरा एक सुझाव है कि हमारा अरुणाचल में हिंद्रेंस किस है, नेचुरल हिंद्रेंस, ये बारिश एक बड़ा हिंद्रेंस है। कोविड इस बार तो कोविड तो बड़ा हिंद्रेंस है, तो ग्लोबल एक हिंद्रेंस है इन वर्क एक्टिविटीज में। बारिश वर्षा जो है अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट चेंज इज वन हिंद्रेंस। हम कोई कॉन्ट्रैक्टर को कई बिल्कुल अच्छा काम कुतुम करेगा बोल के दिन रात करता है, लेकिन बारिश को क्लाइमेट को मुकाबला ही नहीं कर सकता, जिसका कारण कुछ डिले है। और इसको सब अगर ब्लॉक हो जाएगा बोलने से हम तो घबरा रहे हैं कि मेरा अंदर में पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो कुतुम हो, मैं ऑनरेबल सीएम साहब को भी, डीसीएम साहब और हमारा जो आईएएस ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, सबको यह दरखास्त है कि इसका थोड़ा ख्याल करें ताकि लोग ना हो। देन thank you. Lastly, I once again congratulate and appreciate the planning of the budget of the year 2022-23 under the dynamic leadership of Shri Pema Khanduji, the Chief Minister of Arunachal Pradesh. Thank you. थैंक यू। नेक्स्ट कगोंग तगू जी, आप लोग 10-10 मिनट लेने से ठीक है, बहुत ज़्यादा आदमी है। Honorable Deputy Speaker, sir, thanks for giving time to speak on budget 2022-23. Sir, I have gone through the budget 2022-23. Really, it's a grounded and realistic budget as it covers what are to be covered. ये बहुत अच्छा बजट है, हर सेक्टर को ध्यान दिया गया है। इट्स एन इंक्लूसिव बजट। ये बजट को लेके मैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ मायांगेकू एंड माय ओन बिहाफ आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट आवर most dynamic Honorable Chief Minister, our most competent Honorable Deputy Chief Minister, learned Chief Secretary, Secretary Planning Finance, and team members for taking pains to prepare this realistic budget. Sir, while appreciating and supporting the budget, I would like to throw some light on my constituency. Sir, मेरा मायांगेकू कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है कि ही इंटरनेशनल बॉर्डर टच नहीं करता है, एंड ऑल्सो इट डज नॉट फॉल इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इट डज नॉट फॉल इन अर्बन एरियाज, एंड ऑल्सो माई कॉन्स्टिट्यूंसी डज नॉट फॉल इन foothills and interstate boundaries. इसका चलते we cannot take the schemes of border area, we cannot take the schemes of urban areas. Sir, अरुणाचल में ऐसा भी बहुत कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 2-3 ब्लॉक्स जो है अर्बन एरिया बॉर्डर एरिया में पड़ता है, जिससे अर्बन बॉर्डर फंड मिलता है, एंड 2-3 जगह जो है अर्बन एरिया में पड़ता है तो अर्बन फंड मिलता है, एंड 2-3 ब्लॉक जो है माइनॉरिटी कंसंट्रेशन ब्लॉक भी होता है तो इससे भी फंड मिलता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आगे निकल जाता है और मेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बीच में रह जाता है। सर, हमको लगता है मायांगेकू कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अरुणाचल का वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, जबकि मेरा मारियांग टाउन जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन ऑफ आदि बेल्ट नेक्स्ट टू पासीघाट, बट आदि बेल्ट का जितना भी टाउन है आगे निकल गया सब। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी मायांगेकू जो है बीच में रह गया। सर,
I attribute this misfortune to the reasons that my constituency fall in middle zone, which cannot avail the fund the schemes of border areas, the schemes of urban areas, and the scheme of food fields. इसलिए सर मैं थ्रो यू मैं ये अपना पीपल्स फ्रेंडली गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा, मेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी द कॉन्स्टिट्यूंसी लाइक Mayangeku needs little more sympathy from the government. Government से sympathy मिलता है, ऐसा बात नहीं मिलता है. We get sympathy from the government, but it needs more sympathy. क्योंकि अपना मेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी को भी बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी का साथ ले जाना है, साथ में जाना है. No part of Arunachal can be left behind. So इसके बाद मैं आपका थ्रो कहना चाहूँगा, मेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी नॉन बॉर्डर ब्लॉक, नॉन बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो नॉन बीएडीपी दिए हैं, फंड दिए हैं, ये बहुत काम में आता है. और इफ इट कुड बी एनहेंस, मेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत रिलीफ मिलेगा अप टू सम एक्सटेंट. ये सब कहते हुए मैं ये बजट 2022-23 को सपोर्ट करते हुए यही मेरा भाषण समाप्त करता हूँ. थैंक यू सर. थैंक यू. नेक्स्ट वांगन नवाडोंग जी. Honorable Deputy Speaker, sir, thank you for permitting me to take part in the budget discussion. At the outset, I would like to appreciate the Honorable Deputy Chief Minister, who is also in charge of finance and planning, for bringing out a sustainable budget in this very difficult situation and times. Though it may be called a deficit budget, deficit is good in developing economies like India, and also an upcoming state like ours, Arunachal, which also helps in generating additional demand to boost the economic growth. That way, there is a positive sign and aspect of being a deficit budget. The estimates of 2022-23 projected an amount of 24.253.54 crore as capital receipts, as revenue receipts, sorry, and 1,858.09 crore as capital receipt, making a total receipt of 26.111.63 crore, which is an encouraging 15.6% higher than last year's. One of the good aspects of this budget which I have seen is the creation by blocks, the presentation in a block form of 6 blocks, which is very easy to assess also by any person and to understand. And I feel that is what the essence of the budget should be.
that it is easily subscribable to the lay person to follow and to make his own or her assessment of what the budget of the state indicates. I would also like to appreciate the state government under the leadership of Shri Pema Khanduji, along with Honorable Deputy Chief Minister, that our state has been awarded the most improved small state category as far as infrastructure and governance is concerned. That I feel is a good achievement. Though I may be critical of some of the aspects of the budget, but the good things that are there in it, I have to appreciate. That is the very essence of our discussion, and that is the true ambience of the parliamentary form of democracy in our state. Going into the detailed conscription of the budget may take quite a long time. It may not be very relevant. But some of the points that I would like to raise, that this government has this year given emphasis to culture and also particularly the indigenous and also the Atmanirbhar, which I think is very important in a state like Arunachal. We have to go back to the roots. We have to know who we are. And that can truly be reflected by preserving and promoting our cultural heritage. Coming into the cultural aspect, I would once again like to thank Honorable Minister, Deputy Chief Minister and Finance Minister for sanctioning in the last year's budget an amount of 2 crore for the Narottam Cultural Heritage Center at Borderia. Narottam was my forefather, the erstwhile chief of Borderia and Namsang, undivided, who was initiated into the Vaishnavite fold in the year 1670. And remembering him and his contributions as a saint will reflect the due importance that the government has given to the cultural affinity of our people. And many of the schemes that has been promoted in building cultural halls, centers. There in Tirap also, there are some people who still believe in the Vaishnavite fold, in the Hindu fold. So they have namghars in the villages. So I would like to request Honorable Deputy Chief Minister to also keep aside some fund for these namghars in Tirap district, in the places where it need to be built. And also I would like to take this opportunity to request him further to enhance the Narottam Cultural and Heritage Center
building fund as suggested in the DPR in the current fiscal year if possible. Now, the government has also given emphasis on health sector. And amount of 30 crore has been earmarked for allocation to improve PSCs and CSCs. That is very important. What we had been focusing on was only in the general hospitals situated in the towns and the capital regions, and also the district headquarters of district hospitals. But those in the remote areas subscribing to the health services of the poor villagers in remote localities where PSCs and sub-centers are situated. These centers also should be looked into. Most of the PSCs in the state are functioning with inadequate manpower and staff, and also without the basic medical infrastructure that is so much required for improving the health. As health is the key to progress, an amount of 450 crore had also been kept aside. I feel that due importance and cognizance must be taken. We have just gone from a very critical situation. We have not yet come out from the dark COVID situation. We all have to be careful. There is a talk, we have just seen the third wave. There are assumptions and talks of a fourth wave. God willing, I hope that no more waves will occur, but one can't say. So health is very important, and we have to be very careful as far as this is concerned. Another sector is the education, which is equally important. The government has earmarked an amount of 500 crore, if I may be right, for the Eklavya model residential schools in the state. 8 more are in the pipeline. I too have one suggestion, as I have an Eklavya model residential school, EMRS, in my constituency at Khela village, which was sanctioned in the year 2016. The construction is yet to be completed because of inadequate funding. An amount of 14 CR was allocated for this construction of the EMRS in my constituency at Khela village. The buildings and the structures have come out excellent. And people who have gone there to visit and see it have all appreciated it. Say that it's coming up beautifully. Only some infrastructure is yet to remain completed. And hopefully by this year itself, this session we will start its operation. Why I'm saying so is that an amount of 14 crore was allocated for that EMRS, whereas now we see an amount of 500 crore being
ought to be utilized for this EMRS. So if we take that into consideration, each EMRS will be allocated a substantial amount of, say, 40 crore rupees. Why I'm stating this is that with the 14 crore that has been allocated for the EMRS there is no proposal for auditorium. That means there's no auditorium, no playground, no power supply connection, no approach road. The boys' hostel is yet to be constructed. The water supply, with the kind approval of the PHE department, has been connected. There was an additional expenditure. So I feel that while allocating this 500 crore, please also remember me. The PMGSY maintenance, an amount of 30 crore has been earmarked. $60 crore, I'm sorry. But then there is a condition that any road which is less than 5 kilometers will not be benefited by this maintenance fund. Many of the PMGSY road in my constituency are below 5 kilometers. So I'll be deprived of this maintenance fund. So can't the department concerned bring out an amendment to include all PMGSY road, no matter how small it may be, so that we are not deprived of this maintenance fund. And most of the PMGSY road in my constituency was constructed more than 10 years ago. I would also like to appreciate, as far as education is concerned, innovative schemes and ideas have come up to uplift and encourage the students of the schools, like the Mukhya Mantri Shiksha course and also the Mukhya Mantri Champion Fund, which will bring out the talent, the hidden talent among the children. But one thing I would like to point out is that Tirap Polytechnic, the buildings which were completed, is lying idle. No attempt has been made by the education department as yet to start the polytechnic. Neither is there any ITI in the district. So I feel that the education department should take steps to see that this polytechnic comes up and start functioning. There are various reasons and excuses that are given by the department, but I'm not sure how far that is true. And also, as far as the Golden Jubilee multipurpose activity centers in the 5 basins are concerned, there is also an innovative scheme as far as sports is concerned. There is also a very appreciable scheme. And the agriculture, horticulture sector of providing 60 crore for areca nut, tea, rubber, etc. is a brilliant idea to bring about the improvement of horticulture and agriculture in various parts of the state. My region, PCL region,
has got good climatic condition for these crops, and people have taken up these three crops in a large way. Last year too, I think some fund was allocated for that, but I do not know how that distribution took place. I hope that this year, when such a huge amount has been kept, the encouragement of the farmers of these three crops, that it will reach all the beneficiaries. The government has taken a deep concern and importance for the development of border areas, the border villages. Very appreciable. But besides that, there are areas who reside in the Assam border part, like my constituency and various other constituencies are there. We have a non-BADP schemes allocated to the non-border area, international border areas. But that amount is not sufficient, 1 crore. So I feel that the entry to our state should also be beautified. And how do we beautify and fortify it? By giving us various schemes of development, so that anyone coming, any tourist entering Arunachal will feel that, yes, some semblance of development and progress has been done. So besides the international border areas, which is a very welcoming step by the government, both of the center and the state, non-BADP fund also should be enhanced. I would not like to go any further, but there are so many things which I can narrate. But there is one important aspect which I would like to mention. This has come out also in the short duration discussion just today. The de-reservation of the reserve forests. While standing up to the occasion and participating in the budget discussion towards the development and progress of our state, there can be no semblance of progress and development if there is no land. Yes, Arunachal has got a huge geographical area of 83,000 plus square kilometers. That is besides the point. But we have more than 10,000 square kilometers under the reserve forest. Besides the other forests of protected forests and the unclassified state forests, USF, which is equivalent to more than 2/3 of our state area, 51 or 52,000 square kilometers to be precise. Why this de-reservation is important as far as the environment and forest is concerned is because on every occasion when there are plans and programs to partake to development, even a simple road construction, and most of the foothill areas of our state are reserve category. Now the permission has to be taken from the Environment and Forest Government of India, and forest clearance has to be given. There are over 307 notified forests in Arunachal. (66%), that is 201 of such forests are still awaiting final notifications. For example, even Itanagar, our capital, is under the wildlife sanctuary.
Itanagar Reserve, which was declared a wildlife sanctuary. Just a few months back, there was a tussle between the highway and the forest department in regard to the construction, the extension of NH 415. Why? Because of this forest issue. So we have to take some decision, urgent decision, to clarify this notion. Many of the areas, I'm not saying that we should declare as de-reserve the entire forest, but particularly areas which may be required for the progress and development projects that will come up in the state, those have to be earmarked. Deomali is under the reserve forest. Although Deomali town existed in 1948, Namsai itself is under the reserve forest. Deopani was de-reserved, 134 hectares. There are various forest areas which need to be de-reserved, especially the township that has come up, like Namsai, like Deomali, and some settlement areas in my constituency of Bogapani. And there may be various other places also which required. Ultimately, the budget is for the development of our state. And where do we develop? There are towns which have come up like Deomali and Namsai, for example, even Itanagar. Tomorrow, any activist can raise this issue. So the government has to be deeply concerned as far as this is concerned. And I suggest that the Honorable Supreme Court may be approached to constitute a high-powered committee or a central empowerment committee comprising of retired Chief Justice to suggest ways to come out of this precarious situation in the best interest of the state, country, and also the flora and fauna, to put an end to the mockery of reserve forest status. Taking into consideration all the stakeholders that are there. So this is one very important issue that has to be given due cognizance. And as far as the police department is concerned, the activities of the police in controlling the law and order in the state has made tremendous strides. And for this, I would like to suggest one particular request, is that many Mahila police stations have been set up in various townships and district headquarters. Kunsa, one of the oldest headquarters of the state, district headquarters, is yet to come up with any Mahila police station. So I request that a Mahila police station at Kunsa also
to come up within the current fiscal. आपका भी मेंशन, आपका नोट भी है. While supporting the budget, I appreciate the concern of the Finance Minister in trying to bring about a best possible budget as can be in this very difficult situation of this COVID era, and trying his best to bring about development, structural activities in the state. And I'm sure that this amount that has been kept would be spent in a very judicious manner, and it will reach each and every pocket of the state for its future growth. Thank you, sir. Thank you. Next, Lumbo time, Honorable MLA. So please try to manage and maintain time because we have so many. Thank you, Mr. Deputy Speaker, sir. I won't touch upon the budget discussion is because in the history of this August floor of House, we have already passed the budget without discussion. So, sir, I will begin with few submissions only for the consideration of the government. First of all, sir, when the budget was already passed, my submission would be regarding enhancement of the MLA Local Area Development Fund. I urge upon the government that the MLA Local Area Development Scheme funds should be raised from 3.25 crores per annum to 5 crores per annum. It's because it is only the sustainable scheme available with the MLA to maintain their own constituencies. I think almost all my member colleagues will agree with the enhancement of the rate. Secondly, this may be just to make out the fund if necessary. Mr. Chairman, if necessary, fund may be curtailed from some other sectors to make it 5 crores per annum. Sir, Chief Minister's Gramin Awas Yojana is really a popular program. This should be enhanced from 1 to 2 to 3 villages in a constituency in a year. For sir, what I saw is inordinate delay in according financial concurrence to any schemes. For example, during May 2021, Education Department moved the case for obtaining financial concurrence for a sum of ₹2 crores for meeting up the 100-bedded girls' hostel in the entire state, which was released as the central share from Government of India. Now the total committed liability in the Education Department is still 15 crores, Chairman sir. Education Department was supposed to submit the utilization certificate after using these 2 crores.
but the concurrence accorded only in February, March. Where is the time for them to use, and where is the time for the education department to submit the utilization certificate to Government of India to obtain the subsequent installment? I think the system should be corrected. Then secondly, under the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas, there should be equal distribution of fund in all the places in the state for equitable development in the state. There is parity. Anyway, it will be recorded, sir. They will hear from the recording system. And then secondly, sir, Chairman sir, I would suggest the government of Arunachal that the district development committee be wind up. Initially, it was constituted in order to avoid the overcrowding and unnecessary hovering around the CMO, Deputy Minister's office, and also other offices by so many individual people asking for the individual schemes. But what I found, the district development committee has got nothing to do in any recommendation of schemes, selection of schemes, and obtaining sanction from the government also. Any schemes decided in the district development committee is not taken in consideration even in the cabinet committee on infrastructure also. So this may be wind up. And I am also in agreement with Honorable Member Kangong Taku and Wang Linji for enhancement of non-BADP fund at least to 3 crores in a year. Sir, I appreciate the government is frank enough to lay a deficit budget. And that deficit should be borne by every one of us. But at the same time, what I should say is, state is facing a deficit budget. In one hand, it should not be surplus in some areas. For the last so many years, what I saw, though there is a deficit, but somewhere there is surplus. Fund is pumping and pumping and pumping in only few selected places. So it should not be happen right from this year. Then, Chief Minister's Samaj Shiksha Yojana should also be continued with sufficient fund. Then lastly, sir, Chairman sir, my request to government is, since we are now a COVID-free state, the austerity measure for creation of posts, for sanction, for everything, austerity measure which was imposed upon should be lifted. With this, I need not support, but we have already passed the budget earlier. I extend my sincere thanks to you, Mr. Chairman, for giving me the chance. Thank you. Thank you.
Thank you, Honorable Member. Now, Tarin Dakpe, Honorable Member. Thank you, Honorable Chairman, giving me this opportunity to participate the budget discussion of 2022-23. First of all, I would like to congratulate the Council of Ministers, particularly Chief Minister and Deputy Chief Minister, and also the Planning and Finance Investment Department for preparing budget meticulously covering all the sectors. Under the energetic and young leadership of Chief Minister, has performed well supportive budget for the year 2022-23. Hopefully, 2022-23 budget will definitely take our state in one step ahead of development of project schemes. Although this budget has covered up all the sectors, and this time, the 6 pillars have been guided in this budget. That is investing in health sector, investment in human capital, Atmanirbhar Arunachal Pradesh, synergy and convergence, governance reforms and prudent financial management, environment and protection and climate resilient infrastructure, last 2.5 years, we were under lockdown of pandemic, 2019 pandemic. The state is emerging out of the COVID-19 pandemic. We have learned lessons during pandemic. Due consideration may be taken and need to shift the focus from expenditure-oriented planning to outcome-oriented planning. Although this has been taken in this budget, this budget taken in the budget, as I have seen, is required to be aligned with SDG goal. It is observed that several budget announcements were made in the previous years, but many of them could not be taken up as due to various timeline factors. We must appreciate the government, Council of Ministers. Before budget is prepared, pre-budget discussions were taken, especially from experts who have suggested how budget has to be oriented for the next. And their valuable suggestions for the state budget and share priority concern. This has already been brought to the common people to participate and is appreciable and commendable. I am happy that proposal to increase the allocation for honorarium to registered indigenous priests, especially. This government has taken our traditional ritual, especially the priest. Here, the government has earmarked for honorarium for priests. Yesterday, I think I have discussed in my star question regarding modalities, how the priest has to be appointed and their guidelines has to be made. After announcement or after guidelines is given,
the deputy commissioners or circle officers are to be made, and they should scrutinize it, and the priest which will daily, the priest whom they will select or appoint must be a real priest. Here in this budget also, the government is upgrading 18 district hospitals in state in amounting to rupees 250 crores. And also 60 identified PHCs, CHCs. Here I would like to urge upon the government through you, sir, the funding pattern, especially construction of hospital, district DC secretariat, should not be made phase manner. It should be funded at one go, so that the hospital could be built up within 2 years or 1.5 years. And also district secretariat, DC secretariat. I have seen that phase manner funding this year, say, in my district, DC secretariat has been sanctioned last 2019-20. Due to pandemic, of course, it could not be materialized. But the fund has been funded for only 50 lakh, which was sanctioned for 12 crore 50 lakhs. In this manner, if we go phase manner, it will never be completed within the stipulated period. As a result, उगर होने वाला नहीं है. तो इसलिए my submission to the government, especially hospital जो आपने earmark किया है, and district secretariat को जो earmark किया, उसको full funding होना है, so that we can continue it, complete it within 2 years. ये मेरा submission है. Budget to education में focus किया है. Then 2021 was declared as education year. तो उसमें भी ये है, last 2021 में declare किया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है. This year I have seen that अभी मेरा district में Raga Higher Secondary School has been identified as model residential school. लेकिन फंड नहीं हुआ है. तो इसी वजह में अगेन देयर इज ए प्रॉब्लम. तो उसको अगर विद इन 1 or 2 ईयर में अगर एट वन गो फंडिंग नहीं देगा, देन डेफिनेटली ये स्कूल का जो पोजीशन है कभी सक्सेसफुल नहीं होगा. हम लोगों का टेन्योर तो 24 में ख़त्म होने वाला है. ड्यूरिंग आवर टेन्योर हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे. इसलिए इसमें भी मेरा जो रिक्वेस्ट है कि यू हैव earmarked for 500 crore, whether you are going to give at one go or phase manner. तभी तो उसका जो है स्कूल हम लोगों का जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का, हमारा डिप्टी सीएम का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट का जो विजन है वो कंप्लीट होना होगा. तो ये पूरा फंडिंग देने से अच्छा है. मेरा जो रिक्वेस्ट है. लॉट ऑफ टॉक हैज़ बीन टेकन अप, स्पेशली स्पोर्ट्स एंड यूथ का. बहुत अच्छा है हमारा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर, तो इज टेकिंग सो मच इनिशिएटिव. रियली ये जो है हमको इनकरेज करना है. यूथ आजकल ड्रग एडिक्शन हो रहा है और सब लोग अपना लाइन से भागते जा रहा है. इफ़ वी कैन ब्रिंग देम बैक द स्पोर्ट्स स्पिरिट में, डेफिनेटली हम लोगों का स्टेट यूथ का एम्प्लॉयमेंट आजकल नाउअडेज क्रिकेट में बोलिए, एनी स्पोर्ट्स इवेंट में ही और शी इज़ एक्सपर्ट मीन्स वो उसका अपना लाइन भी बन जाता है. इसलिए ये बहुत इनकरेजेबल है.
देन अदर्स जो है आपका इधर दिया हुआ है, और स्पेशली अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। इन्होंने एक बढ़िया अच्छा चीज़ लिया है कि एयरगन सरेंडर अभियान, और कल भी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा कि अभी तो एयरगन सरेंडर अभियान के बाद हम कुछ चिड़िया का चींची या चिड़िया का आवाज़ सुनने आया है। ये अभियान सचमुच और भी जोर लगाने से ठीक है। Royo sir, I would like to urge upon all my esteemed colleagues, honorable MLAs, अपना डिस्ट्रिक्ट में जैसा हमने तो सरेंडर कराया मेरा उधर जब मिनिस्टर आए थे, दैट इज़ ऑल्सो इन रिमोट प्लेस। जब फॉरेस्ट का वो लास्ट टाइम हमने डी रिजर्व के लिए रिक्वेस्ट किया था, आज भी ये चर्चा हुआ डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो मेरा उधर तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया। देन आई हैड यहाँ में अगस्त हाउस में हमने अपील किया था, अर्ज किया था गवर्नमेंट को। अकॉर्डिंगली ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ने आकर अपना खुद देखा है कि सचमुच गांव तो वाइल्ड लाइफ का अंदर में पड़ गया। दैट इज़ वाई इसको भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक कमेटी, हाई पावर कमेटी बनाकर, जैसा सर ने तो बोला है पूरा सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो सेम थिंग इसको सुप्रीम कोर्ट में तक ले जाने के लिए कमेटी बनाना पड़ेगा। कमेटी का स्क्रूटिनी करके हम लोग भेजना है। और आज तो इस आश्वासन दिया है ऑनरेबल मिनिस्टर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने कि हर डीसी को और डीएफओ को और ऑनरेबल एमएलए लोगों को कि जल्दी से जल्दी इसका जो एक सजेशन या आपका उसका माइनस बना के भेजने के लिए वी आर डेफिनेटली, वो हम लोग ज़रूर, हम तो भेजेंगे फर्स्ट में, तो उसका आगे बढ़ाने से बहुत अच्छा है।